Hello friends, welcome to MALUKA IAS. Friends, this is day 7 of daily answer writing for general studies that we are continuing. Friends, बहुत ही important topic है, the complex power struggle that was going on in India in the 18th century that finally led to the finding of foreign establishment of the British rule in India. बहुत ही important question है, ऐसे question UPSC में अक्सर आ रहे हैं. Friends, जीएस की डेली आंसर राइटिंग और ऑप्शनल की मलूका आईएएस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली आंसर राइटिंग फ्री हो रही है. डू अटेंड ऑल दो सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग, बहुत ही ज्यादा आपके मेंस के लिए यूजफुल होने वाले हैं. द क्वेश्चन फॉर टुडे इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रिवेलिंग कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल. ये ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो चुका है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रगल दैट वाज देयर. एक द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर कॉम्प्लेक्स एंड पावर स्ट्रगल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑफन फॉर एग्जांपल यूपीएससी में आ जाते हैं. फ्रेंड्स, व्हेन द 18th सेंचुरी वाज देयर, आप इसको जो फॉर एग्जांपल पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन में आपको एक सिनेरियो दिखाना पड़ेगा. व्हाट वाज बेसिकली द सिनेरियो दैट वाज देयर इन द 18th सेंचुरी. What was basically the scenario that was going on in the 18th century? इसको आपको समझाना पड़ेगा. When you talk about the 18th century, in the 18th century, the Mughal or the central authority that was existing at that particular point of time, वो मुगल की central authority, for example, वो decline हो चुकी थी. And various states they have emerged out of it. Therefore, what was going on is, on the one hand, Mughals' authority was comparatively declining. The central authority had comparatively declined on the one hand, and on the other hand, what was there was, when it declined, it failed to maintain its control over other areas that are there. जिसके चलते हुए various regional powers, for example Hyderabad, for example the Carnatic, or for example Bengal, they try to establish them. So मराठास हो गए, मैसूर हो गए, इन्होंने अपने आप को establish करने में कामयाब हो गए. On the one hand, the Mughal authority was declining, central authority was declining. On the other hand, the regional powers which were coming up, दो पॉइंट ध्यान में रखिए. मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही है, रीजनल पावर इमर्ज हो रही है. रीजनल पावर किसके साथ लड़ रही है? ऑन द वन हैंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अ सेंट्रल अथॉरिटी, ऑन द अदर हैंड दे आर आल्सो फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्फ आल्सो. Therefore, this power that is there was comparatively very complex that existed at that particular point of time. तो कहाँ पे आपको देखना क्या है? तो वहाँ पे मुगल अथॉरिटी comparatively decline हो रही है, and other things were there. For example, आप continue क्या करोगे? यहाँ से उसके बाद what were the regional powers that are there? These regional powers were there, and these regional powers they were fighting amongst themselves also. For example, Marathas they were fighting against Mysore. Marathas they were fighting against, for example, Bengal also. Mysore was fighting against Carnatic. Mysore was fighting against the Nizam also. These powers they were basically fighting against each other. And most important thing is, Marathas they were trying to establish themselves at the decline of the Mughal Empire also. कोशिश कर रहे थे अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे अपने आप को इमर्ज कर सकते, बट वहां पे क्या हुआ? अब्दाली ने आके अटैक कर दिया. So therefore, the regional powers are there. Marathas are there. Mysore is there. Hyderabad emerged, or for example, Bengal emerged, and they were not only fighting against a central authority, but also fighting amongst themselves also. And in this particular this area, the region had comparatively become very complex. Therefore, the complex power struggle there. This is one point. Not only that it was comparatively complex that were there, not only the regional powers were fighting, but also various nobles were also fighting. Nobles that were there, basically they tried to establish that जो person उनके favor में है, that person should basically be sitting on the throne. Therefore, the nobles they were also trying to have their influence, that they tried to put their own nominees on the throne. They were trying to have a bigger influence also. So, वहाँ पे on the one hand the central control is declining. On the other hand, for example, the regional powers are trying to establish themselves. And in this, the complex had become even more complex in the context that the nobles they also wanted that the person who is known to them, the nominee that is there on the throne, should be, for example, close to them. The nobles भी, for example, अपना role comparatively काफी हद तक play कर रहे थे. Another thing that is why this was even more complex. It could basically be seen in the consideration that these powers were almost equally powerful.
अगर एक पावर स्ट्रांग है, एक पावर वीक होती तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन ऑल द पावर्स आर इक्वली स्ट्रांग, इट इज म्यूचुअली इंटरसाइड, सबका नुकसान हो रहा है। नन ऑफ द पावर वाज एबल टू फॉर एग्जांपल इमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। अगर मराठास मैसूर के साथ लड़ रहे हैं तो दोनों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। मैसूर निजाम के साथ लड़ रहा है, दोनों का फॉर एग्जांपल नुकसान हो रहा है। देयरफॉर दैट रिजल्टेड इन व्हाट इज नोन एज अ पॉलिटिकल डिक्लाइन, दैट रिजल्टेड इन अ मिलिट्री डिक्लाइन ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। This complex power, for example, was made even, for example, when Abdalis and others, for example, they invaded India from the northwest part. वहां पे मुगल सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है, रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही है, वो मुगल्स के साथ लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, नोबल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल इक्वली पावर इक्वल मैचिंग पावर थी, एंड द पीपल दे आल्सो केम फ्रॉम आउटसाइड ट्राई टू एक्सर्ट देयर ओन इन्फ्लुएंस। Therefore, it was a complex power struggle that was going on at that particular point of time. And in the end, you will write it, because of the complex power struggle, for example, it led to a vacuum. वहां पे vacuum establish हो गया. And therefore, it was in this vacuum that the British, they attempted to establish their own empire. और करने में फॉर एग्जांपल काफी हद तक कामयाब। द प्रोसेस द बिगिन फॉर एग्जांपल कहां पे बिगिन हुई, फॉर एग्जांपल इन दिस रीजन, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस, एंड दैट फाइनली कल्मिनेटेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द 19th सेंचुरी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग, योर आंसर शुड बी गोइंग इन अ प्रॉपर फ्लो, तभी कंपेरेटिवली आप बहुत अच्छा आंसर लिखने में कामयाब हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मॉडल आंसर आपको मलुका आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक पूरे का पूरा मॉडल आंसर भी है, दैट हैज बीन बेसिकली बीन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। आप ये मॉडल आंसर भी पढ़िए एंड ट्राई टू राइट अ सिमिलर आंसर ऑन द पैटर्न, जिस तरीके से आपको बताया गया, इस तरीके से आंसर लिखोगे, दिस ऑल चांसेस दैट यू वुड कंपैरेटिवली बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। फ्रेंड्स, कंटिन्यू वाचिंग ऑल दोज क्लासेस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय मलुका, इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको आप कंटिन्यूसली देखिए एंड ट्राई टू हैव अ वेरी ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।